Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now I am going to narrate a very interesting story, The Horse. The Horse is written by R.N. Tagore. He was born in Calcutta in 1861. He was awarded for his work as Gitanjali. He was poet, writer and novelist. He was the composer of Janagana Mana. He died at Shanti Niketan in 1941. So let's start the lesson, The Horse. The work of creating the universe was nearly over when a new idea struck the creator's mind. He summoned an assistant and said, summoned means call karna. Bring me some more materials. I shall make a new species of animal. The assistant knelt down and replied, Father, when under the creative zeal you made elephants and whales, lions and pythons, you barely thought of the quantity of substance they cost. Little is left of the heavier and harder stuff, but of the lighter there is still enough in a store. जब क्रिएटर ने असिस्टेंट को बुला करके पूछा कि मुझे कुछ और मटेरियल चाहिए, मैं एक नया जो है स्पीसीज एनिमल का बनाना चाहता हूँ, तो क्रिएटर ने असिस्टेंट ने उसको क्या रिप्लाई करा कि जिस समय आपने एलिफेंट बनाए, वेल्स बनाए, लायंस बनाए, उस समय आपने क्वांटिटी के बारे में और जो क्वांटिटी का जो सब्सटेंस का जो कॉस्ट था उसके बारे में बहुत कम सोचा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हैवियर है वो हैवियर और हार्डर है वो थोड़ा सा अब जो है हमारे पास उसकी शॉर्टेज हो गई है, जो हैवी मटेरियल है उसकी थोड़ा सा शॉर्टेज हो गई है, लेकिन जो लाइटर है वो अभी भी स्टोर में है. द क्रिएटर रिफ्लेक्टेड फॉर अ मोमेंट. रिफ्लेक्टेड मीन्स सोचा. The creator reflected for a moment. Well, bring me whatever you have. This time the creator took care to employ only a little of the hard materials to the new animal he made. He gave neither horns nor claws. He gave it teeth that could chew but not bite. The energy he gave it was enough to make it useful on the battlefield, but he gave it no taste of its own for battles. The animals came to be known as the horse. भगवान ने क्या बनाया? एक ऐसा जीव बनाया जिसके पास पूरी एनर्जी थी, लेकिन वो एनर्जी क्या थी उसके लिए? बैटलफील्ड में वो उसको यूज़ कर सकता था, लेकिन उसके अपने पास जो है ऐसा कोई टेस्ट नहीं था कि वो उस एनर्जी को किसी बैटल में यूज़ कर सके. द एनिमल वॉज नोन एज द हॉर्स. वो एनिमल कौन सा था? हॉर्स. The creator had spent in its making enough of such stuff as the air and the sky are made of. The result was that its mind was full of the desire for freedom. It would run a race with the wind. It would dash to the point where sky touched earth. Other animals ran with a purpose, but the horse raced about for no apparent reason, as though it were eager to fly away from its own self. It didn't fight. It didn't pounce on a prey, but loved only to run and to run. Wise men say that such a thing happens when you have too much of the wind and sky stuff in you. अब जो और एनिमल्स थे वो दौड़ते थे, लेकिन जो हॉर्स था वो क्या करता था? दौड़ता था, लेकिन बिना किसी रीज़न के दौड़ता था. वो शिकार के लिए भी जो है वो जंप नहीं करता था, लेकिन उसको क्या पसंद था? सिर्फ दौड़ना और दौड़ना पसंद था. द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विद हिज ओन वर्क. डिलाइटेड बहुत खुश होना, आनंदित होना. द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विद हिज ओन वर्क. टू सम एनिमल्स ही गेव फॉरेस्ट टू लिव इन. टू सम ही गेव डेंस. But as he liked to see the horse running an animal race, he assigned to it an open field.
किसी के लिए भगवान ने क्या दिया, फॉरेस्ट दिया रहने के लिए, किसी के लिए डेन दिया, लेकिन हॉर्स के लिए क्या दिया, एक ओपन फील्ड दिया. बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन. He was bent under the weight of the burdens he had accumulated. Accumulated means इकट्ठा करना. As he saw the horse, he knew that he would be able to shift his burden onto its back if somehow he could capture it. अब जैसे इंसान जो है अपने काम के बोझ से दबा हुआ था, तो जैसे ही घोड़े को देखा उसके दिमाग में क्या आया कि मैं अपना जो बोझा है वो इसकी बैक में रख सकता हूँ, लेकिन मैं अगर इसको कैप्चर कर लूँ, कैसे मैं इसको कैप्चर करूँ. वन डे ही seized his nets and captured the horse. He put a saddle on its back and a curb in its mouth and kept it confined in a prison. एक दिन उसने उसको प्रिजन में कैप्चर कर लिया, बांध दिया उसको उसने जेल में. द टाइगर रिमेन्ड इन इट्स फॉरेस्ट होम एंड द लायन इन इट्स डेन, बट द हॉर्स लॉस्ट इट्स होम, द ओपन फील्ड. In spite of its deep love for freedom, it could not escape bondage. Bondage means बंधन. जैसे मैन ने उसको प्रिजन में बंद कर दिया था आपने, तो अब उसके पास जो उसको फ्रीडम इतनी पसंद थी ओपन फील्ड में, वो उसके पास नहीं थी. When life became unbearable, it kicked wildly at its prison wall. That did less injury to the wall than to horse hoofs. But after constant kicks, bit of plaster began to fall off. It made man angry. This is what I call ingratitude, he said. I feed it. I have engaged servants to look after it. But that wretched animal doesn't see my kindness. जब गुस्से में घोड़े ने दीवार पर मारा तो क्या हुआ, उसका सीमेंट गिर गया. अब आदमी को गुस्सा आया और उसने उसको क्या बोला कि ये एनिमल कैसा है, इनग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है, इसने मेरी दया के बदले में जो है अकृतज्ञता मेरी तरफ शो करी है. Firm measures were taken to tame the horse. At last, man could say proudly that there wasn't a creature more faithful to him. Claws and horns it had not, nor did it have teeth which could bite. Even kicking it had to give up for fear of the whip. All that was now left to it was to neigh. One day the Creator heard the distressed neigh. He woke up from his meditation and looked down at the open field of the earth. The horse was not there. जब क्रिएटर ने एक घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज़ सुनी, जब उन्होंने आँख खोली तो वो ओपन फील्ड में घोड़ा नजर नहीं आया. He summoned death and said, "This is your doing. You have got hold of my horse." उन्होंने क्या कहा कि तुमने शायद मेरे घोड़े को ले लिया है. Death said, "Eternal Father, you always look upon me with suspicion. But be good enough to cast our eyes on the house of man." क्या कहा उसने कि हमेशा तुमने मुझे शक की निगाहों से देखा है, एक बार मैन के हाउस में भी देख लिया जाए, आदमी के घर में भी देख लिया जाए. The Creator looked down again and saw the horse standing in a narrow walled space, neighing weakly. क्या कर रहा था वो? बड़ी मासूमियत से, बड़ी कमजोरी से जो है वो रो रहा था. His heart was filled with pity, and he said to man, "Unless you set the horse free, I shall give it teeth and claws like the tigers." क्या किया क्रिएटर ने? इंसान को धमकी दी कि अगर तुमने उसको फ्री नहीं किया तो मैं इसको क्या दे दूंगा, टाइगर की तरह से टीथ और क्लॉज दे दूंगा. मैन सेड, "Father, this creature of yours does not deserve freedom. Look, what a nice stable I have built for its comfort and well-being." But the Creator insisted that from heaven the Creator could see the horse
but not the cord. He grew red with shame. So that was the sort of creature he had made. He admitted to himself that it was one of the worst blunder into which he had ever fallen. क्रिएटर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने ये जो बनाया ये बहुत बड़ी गलती हुई. Man said, "What is to be done with it? Are there no fields in heaven where it might be sent to room?" The Creator answered, "I have had enough of." दोबारा से कर रही हूँ. Man said. Man said, "What is to be done with it? Are there no fields in heaven where it might be sent to room?" The Creator answered, "I have had enough of it. Take the creature back to your stable." Man said, "But Father, what a burden it will be to me." The Creator answered, "Yes, but by accepting the burden, you will show your greatness of heart." क्या कहा भगवान ने कि इसको एक्सेप्ट करके तुम क्या शो करोगे? अपने हार्ट की ग्रेटनेस को एक्सेप्ट कर, इसको घोड़े को एक्सेप्ट करके आप क्या क्या शो करोगे? अपने हार्ट की ग्रेटनेस को शो करोगे. तो देखा बच्चों किस तरीके से घोड़ा जो एक फ्रीडम लविंग था, किस तरीके से वो इंसान के कैप्चरिंग में आया और किस तरीके से इंसान ने उसको अपने स्टेबल में बांध के रखा और कैसे वो उसका अब यूज़ करता है. तो आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.